लिखिए एक प्रोजेक्ट में। उसके अंदर एप्लीकेशन, और एक ही एप्लीकेशन बनाई। मैंने क्या बोला था? मल्टीपल एप्लीकेशंस, मल्टीपल व्यूज़, है क्या नहीं? व्यूज़ किस में रहेंगे? जब एप्लीकेशन क्रिएट होंगे तो मल्टीपल व्यूज़ बनेंगे, बराबर है क्या नहीं? व्यूज़ फाइल रहेंगे ना, हर एक की व्यूज़ फाइल अलग रहेंगी। ओके, आपने क्या किया कि एक ही एप्लीकेशन क्रिएट की, ओके, स्टूडेंट नाम की, उसमें आपने मल्टीपल व्यूज़ लिखे हैं। ठीक है, व्यूज़ ओपन करो, यही है व्यूज़। हाँ, कितने व्यूज़ लिखे आपने? 2 व्यूज़ लिखे। हाँ ठीक है, तो अभी एक काम करो, इसमें जाओ, यूआरएल में, प्रोजेक्ट लेवल के यूआरएल में। ठीक है, तो आपने इसमें कैसे इंपोर्ट व्यूज़, तो आगे वो जो है सेकंड लाइन, जो लास्ट वाली लाइन है, इंपोर्ट स्टूडेंट इंपोर्ट, उसका कोई काम ही नहीं है। ठीक है, व्यूज़ एज माय व्यू, उसका कुछ काम नहीं है क्या नहीं? ये जो काम है ये कब गिरेगा? जब आप मल्टीपल एप्लीकेशंस क्रिएट करेंगे। ठीक है, मल्टीपल एप्लीकेशंस, तो अब जब आप मल्टीपल एप्लीकेशन जब आप क्रिएट करेंगे तो उस टाइम पे आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप लिखेंगे वहाँ पे फ्रॉम स्टूडेंट इंपोर्ट व्यूज़, और उसके बाद लिखेंगे फ्रॉम टीचर्स इंपोर्ट व्यूज़, सो इट इज़ गोइंग टू बी कॉम्प्लिकेटेड, है ना? कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ये, बराबर है क्या नहीं? तो उसको समझ में नहीं आएगा कि व्यूज़ कहाँ से लेना है, स्टूडेंट से लेना है या एम्प्लॉय से लेना है क्या नहीं? सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम। सो उस टाइम पे हम क्या करेंगे कि फ्रॉम एम्प्लॉय इंपोर्ट व्यू एज समथिंग, वी आर गोइंग टू चेंज द नेम ऑफ द व्यूज़। ओके, हम क्या करेंगे? व्यूज़ का नाम चेंज करके रख देंगे, बराबर है क्या नहीं? अभी ये इसको हटा दीजिए, वो इस लाइन की कोई ज़रूरत ही नहीं है, निकालो। ओके, रिमूव दैट लाइन, कुछ ज़रूरत नहीं है। जस्ट हमको ऐसे इसको इंपोर्ट व्यू एज कैसे करते हैं, इसके लिए मैंने ये बताया था। ओके, वो 2 लाइन हो गई ना, एक लाइन निकाल दीजिए ना, वो ऊपर की, from student, okay, import as view. Okay, now you can execute and you can see the path, okay, student and second student. Okay, तो देखो, एंड यूज़र को इतने सारे पाथ है, वो याद रहेंगे क्या? ऑब्लिक स्टूडेंट, ऑब्लिक सेकंड स्टूडेंट, ये याद रहेंगे क्या? वो एंड यूज़र को सिर्फ इतना याद रखना है कि उसका यूआरएल, बस प्रोजेक्ट का यूआरएल, बराबर है क्या नहीं? प्रोजेक्ट का यूआरएल याद रखना है। गो टू द इनसाइड ऑफ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का यूआरएल मतलब एप्लीकेशन का यूआरएल, मतलब जो भी क्या बोलते हैं, हमारा वेबसाइट है, उसका सिर्फ होम पेज आपको याद रखना है क्या नहीं? अगर उस एप्लीकेशन, उस और प्रोजेक्ट में बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, उस एप्लीकेशन के अंदर 100 ऑफ व्यूज़ है, ओके, रियल टाइम में 100 के ऊपर व्यूज़ लिखते हैं, तो हर व्यूज़ के लिए अलग अलग पाथ रहेगा कि नहीं? एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन में 100 व्यूज़ है। दूसरी एप्लीकेशन है, देखो, प्रोजेक्ट कंटेन्स द मल्टीपल एप्लीकेशन एंड ईच एप्लीकेशन कंटेन्स द मल्टीपल व्यूज़, बराबर है क्या नहीं? तो अभी एक एप्लीकेशन के अंदर 100 व्यूज़ है, तो कितने यूआरएल बने, यूआरएल पैटर्न बनेंगे? 100 बनेंगे। दूसरे एप्लीकेशन में भी 100 यूआरएल है, कितने बने? है ना? तो इतने यूआरएल पैटर्न यूज़र अंडरस्टैंड याद रखेंगे क्या? इसलिए हम क्या करेंगे, जितने भी यूआरएल है, मतलब हर एप्लीकेशन में बहुत सारे व्यूज़ और बहुत सारे यूआरएल पैटर्न बनेंगे, इसके अलग बनेंगे। और हम क्या करें कि यूआरएल जो है, ओके, यूआरएल जो है वो हम होम में जा रहे हैं, मतलब सॉरी, प्रोजेक्ट लेवल पे जो यूआरएल फाइल है उसमें जाने के बाद हम उसको मैप कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अभी ये होम पेज में आ गए, मतलब प्रोजेक्ट लेवल यूआरएल में आ गए, अभी हम यहाँ पे क्या देंगे? पाथ पैरामीटर देंगे, है क्या नहीं? वी आर पासिंग हियर व्हाट? पाथ पैरामीटर, है क्या नहीं? ओके, सो उसके बाद दूसरा लिखेंगे तो दूसरा आएगा, है ना?
तो अभी करो ये, यहाँ पे तो एक ही एप्लीकेशन है, लेकिन अभी ऐसे रियल टाइम में बहुत सारे एप्लीकेशंस रहेंगे, है ना? तो हर एप्लीकेशन में जितने फंक्शंस लिखेंगे तो उसके हर एक अलग अलग बनेंगे सब कुछ यूआरएल। तो ये प्रोजेक्ट लेवल पे, इसीलिए हम क्या करेंगे कि हर एप्लीकेशन में एक urls डॉट पी वाई फाइल बनाएंगे, हर एप्लीकेशन में। बराबर है, हर एप्लीकेशन में urls डॉट पी वाई फाइल बनाएंगे। उसमें उस एप्लीकेशन के सारे पार्ट लिखेंगे, पाथ लिखेंगे, ओके, यूआरएल लिखेंगे। दूसरे एप्लीकेशन में उस एप्लीकेशन के सारे यूआरएल लिखेंगे, और ये सारे एप्लीकेशन के यूआरएल सिर्फ मेन प्रोजेक्ट के यूआरएल में हम इंपोर्ट करेंगे बाय यूजिंग द इंक्लूड फंक्शन। ओके, हम इंक्लूड फंक्शन पाथ इंक्लूड से हम इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, तो ये एक वे है। बराबर है। तो मैं, ठीक है, मैं अभी शेयर करता हूँ मेरी स्क्रीन, और मैं अभी एक एग्जांपल लेता हूँ टाइम डेट का। उसके बाद मैं और एक एग्जांपल ले लूँगा। ओके, ठीक है, वो एग्जांपल, ठीक है, वो भी एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। जैसे जैसा टाइम हुआ उसके हिसाब से रिप्लाई देना। ओके, देन गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। ओके, उसके बाद हम पाथ पैरामीटर देखेंगे, ठीक है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, वो रियल टाइम में वही यूज़ करते हैं। सो ये जो है ना, यूआरएल मैपिंग एंड यूआरएल डिस्पैचर। ओके, वील सी। Okay, so before that one we are going to take another example, and in the last class what we taken the some two or more applications. Okay, दो applications लिखे हैं, उस applications में हमने कुछ लिखे थे। बराबर है, उस application में दो तीन applications लिखे थे, उसमें व्यूज़ लिखे थे, उसको हमने इंपोर्ट किए थे। तो प्रॉब्लम आ रहा था इंपोर्ट व्यूज़, तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक को इंपोर्ट व्यूज़ लिखना पड़ा और एक को इंपोर्ट व्यूज़, व्यूज़ एज अ माई व्यू ऐसे लिखना पड़ा था। ठीक है, क्योंकि दोनों भी व्यू सेम हो जाते थे। ओके, सो मेरी स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन शो हो रही ना मेरी? ओके, so you can see what we have seen in the last class. Okay, you have created only one app and you created the more than two functions. So my concept is what, मैंने क्या बताया था कि आपके प्रोजेक्ट में मल्टीपल एप्लीकेशन क्रिएट करो, उसमें मल्टीपल व्यूज लिखो। ठीक है, समझ में आ गया ना अभी? हाँ, तो चलेगा 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 चलेगा, कोई बात नहीं। अभी आपने एक ऐप बनाया, उसमें मल्टीपल फंक्शंस बनाए। ठीक है, मान लो कि एक ऐप में आपने दो यूआरएल बनाए। ठीक है, दूसरा भी ऐप क्रिएट करो टीचर का, वहाँ पे दो यूआरएल बनाओ, दो फंक्शंस लिखो, और अपने, ओके, उसके हिसाब से ट्राई करके देखो, आपको वहाँ पे एरर आएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक इंपोर्ट एज अ व्यू करना पड़ेगा, इंपोर्ट एज समथिंग, ये व्यू लिखना पड़ेगा। क्योंकि आप क्या करेंगे, इंपोर्ट, एक एप्लीकेशन का व्यूज़ इंपोर्ट करेंगे आप, ओके, दूसरे एप्लीकेशन का भी व्यूज़ इंपोर्ट करेंगे। अब क्या हो गया, इसका व्यूज़ अलग है, उसका व्यूज़ अलग है, लेकिन दोनों में व्यूज़, वो वर्ड कॉमन आ गया ना, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, व्यूज़ एज, है क्या नहीं? इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, व्यू एज। Okay, so we have seen that one in the last class, no? First Django app. ओके, सो लेना पड़ेगा क्या वो एग्जाम्पल मुझे? मैंने नहीं लिया था क्या इसमें? मैं एग्जैक्टली बताया था ना लास्ट क्लास, यूआरएल। ओके, ओके, ओनली वन ऐप आई हैव क्रिएटेड ना। ओके, यहाँ पे सेव किया द सेकंड ऐप। ओके, लेट अस इनसाइड दैट वन आई एम गोइंग टू क्रिएट नाउ द सेकंड ऐप। ओके, मल्टीपल यूज, मल्टीपल ये, तो इस ऐप में देर इज़ अ व्यूज़। ओके, हाउ मेनी व्यूज़ आर देयर? ओनली वन व्यूज़ इज़ देयर। ओके, okay, no problem. So today I am going to create the other functions also. Okay,
def. Okay, in the main URL, what is there? So first a Django project. Okay, first Django project. Okay, once again I am going to create here one project. Okay, second Django project. आपके लैपटॉप में मैंने दो दो एप्लीकेशंस क्रिएट करके वाला प्रोजेक्ट लिया क्या? लिया है ना दो? तो हाँ ना, दो एप्लीकेशन। तो फिर हमको क्या प्रॉब्लम आया था उसमें? में यूआरएल्स में प्रॉब्लम आया था हमको, बराबर है। जब हम हाँ, तो प्रोजेक्ट लेवल में जब यूआरएल में जाते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट ऐप समथिंग और फ्रॉम सेकंड ऐप इंपोर्ट व्यूज। ओके, दिस विल बी नॉट वर्क। ठीक है, ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया, बराबर है क्या नहीं? ये प्रॉब्लम हो गया है ना, ऐसा लिखा था ना हमने। सो दैट इज अ प्रॉब्लम because in the first app there is also the view, in the second app there is also the views.py file. Okay, but we can't do like this way. So what we need to do here, import view as, we have to write here, this is what, this is my first view, this is my first view and this is my second view। तब यहाँ पे मैपिंग प्रॉपर होंगे यूआरएल में, बराबर है? ठीक है कि नहीं? सो यही मेरा कॉन्सेप्ट था बताने का। नहीं तो फिर यहाँ पे कैसे व्यूज डॉट ऐसे नहीं लिखेंगे, फिर माई व्यू, इसका मतलब है कि ये जो व्यू है, ये जो फंक्शन है भाई, ये फर्स्ट ऐप का है, ये जो फंक्शन है भाई, ये सेकंड ऐप का है। ओके, सो दैट इज़ अ कॉन्सेप्ट बस। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हर ऐप में बहुत सारे मल्टीपल व्यूज, 100 के ऊपर व्यूज रहते, मतलब फंक्शन लिखते, तो इतने सारे उसके यूआरएल पैटर्न बनेंगे। दूसरे ऐप में भी बहुत सारे, मतलब ऐसे बहुत सारे ऐप्स रहते हैं एक प्रोजेक्ट के अंदर, तो फिर इतने सारे हज़ारों यूआरएल कैसे याद रखेंगे, है ना? इसीलिए यूआर यूज एंड यूज़र को सिर्फ क्या याद रखना पड़ता है कि होम पेज। तो इसको हम मैपिंग कैसे करेंगे? ठीक है, अगर आप नहीं तो फिर क्या करेंगे, इस यूआरएल में आपको कितने लिखने पड़ेंगे, 1000 यूआरएल लिखने पड़ेंगे ना यहाँ पे प्रोजेक्ट लेवल पे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक एप्लीकेशन में यूआरएल डॉट पी वाई की फाइल बनाएंगे। ठीक है, उसी में उस एप्लीकेशन के सारे यूआरएल मैप करेंगे। दूसरे एप्लीकेशन में urls डॉट पी वाई की फाइल बनेगी, उसमें दूसरे एप्लीकेशन के सारे यूआरएल मैप करेंगे। फिर ये सारे जो फाइल है हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे बाय यूजिंग द इंक्लूड फंक्शन। ठीक है, तो भी सारे यूआरएल यहाँ पे आ जाएंगे, है ना? तो यहाँ पे सिर्फ हम क्या देंगे, होम पेज। ओके, सो होम पेज यहाँ से ओपन हो जाएगा और बाकी के सब यहाँ से मैपिंग हो जाएंगे यूआरएल्स। ओके, ये भी हम बाद में देखेंगे। अभी हम एक प्रोजेक्ट देखते हैं कि हाउ वी कैन create a project। ओके, सो विथ हाउ वी कैन शो द टाइम। ओके, टाइम प्रोजेक्ट देखते हैं अभी हम, हाउ वी कैन डिस्प्ले द टाइम ऑन द वेब ब्राउजर। ओके, वेब पेज। सो आई कैन गिव हियर। ओके, what is the command to create a project? Okay, python django। okay, django hyphen admin manage.py start project। oh sorry, start project। okay, django admin start project name, so time demo। okay, okay, so now let us create one app, go to the inside the project folder। okay, and create here what app? How to create the app? Django hyphen admin start app and app name। so you can create one app name here। okay, display time। okay, that is one app। okay, or you can give the simple name। okay, time। okay, or a web app, you can give any name, no problem। okay, so now let us see here। okay, this is what project, inside there is a one time demo project name and display
time, it's a app name. Okay, so once we created that one, we have to do the configuration. Okay, so let us go to the setting.py first. Okay, where is the setting.py? That is available in the project level. Okay, project level setting.py. Setting.py, where is that one? Then project level. Okay. Mm, okay, yes. This is project level. Okay, setting.py. So here we need to go for the setting. Okay, in middleware and sorry, installed app. Where is the installed app? Yes, here we need to add the app name. Okay, what is the app name? We created that one. Display display time. Okay, display time. This is the app we have created. Display time, right? And next we need to go for views on the display time. Okay, so you can write here what business logic. Okay, so here we can type here what from Django dot http. Okay, then import what http response. Okay, http response, right? Then you can write here the function. Now you can write the name of the function. Okay, you can view, or you can write the view name of the function. We are going to display here the date and time. Okay, then we are going to see how we can pass the integer value to the URL. Okay. Mm, okay, you know date and time module in the Python. Okay, so we need to import that one first. Okay. Okay, no problem. So time info. Okay, I'm giving the name. That is what time info. Okay, time info is the name, and you can give the request here. Okay, that is request parameter variable. Okay, and we need to return the response. Okay, returns that response. Okay, http response. So here you can type anything. Okay, first I'm going to display. Okay, and here time is here. I am writing like this way. Okay, first of all I'm going to check here. Okay, whether this my install whatever I did that one everything is okay or not. Okay, so next one, where you need to go map the URLs. Okay, and go to the URL is available in where project level. So okay, so first of all we need to import that views from the application. What is the application name? Display. Okay, display time is the application name. Then import what we need to import? Views. Okay, and we need to give provide a path here. Okay, then path is equal to, और old में कैसा लिखते थे पता है क्या? URL. ओके, ऐसा लिखते थे पहले के ज़माने में, मतलब इतना भी ज़माना पुराना नहीं हुआ. ओल्ड जैंगो स्टाइल है. ठीक है, ऐसा लिखते थे. ठीक है, ओल्ड जैंगो स्टाइल. एंड हियर इसमें ऐसा लिखते थे, दिस इज ओल्ड जैंगो स्टाइल. ओके, लाइक दिस वे, एंड यू कैन प्रोवाइड अ पाथ हियर. ओके, सो ये है ओल्ड वे और ये है नया ज़माना. ठीक है, so here we can provide a path. Okay, so I am writing here what time. Okay, so views name you have to write here what is the name of this view function name. Okay, how we can write views dot this one. Okay, yes. So now anything is required to do. Okay, everything is okay. Let us run the project. Okay, how we can run the project? Python manage dot py. Okay, run server. Okay, run server. Python manage.py run server. Okay, what is the URL you provided? Time. Okay, server is started and it is ready. So go to the browser. Okay, open this browser and hit the URL. So this is not a URL. Okay, you need to provide here what time. Okay, so time is here, right? So everything is perfect. Now go for
to write the code. Okay, here I want to display the time. So which method, or you can say the some predefined functions are available to display the time. Okay, so here we can take one variable. Okay, time is equal to, we have the module, what is that, date time. Okay, date time dot date time, so it will display what, date time. Okay, if you want to display time, you can display the time. Okay, date time, and the function is what, now. Okay, this is the function where we are stored there inside the time. So here we can take here, okay, you can give here directly returns what time, so it will display what time. Okay, and okay, so you can check here the server is automatically running. Okay, and let us refresh there. Okay, refresh there. Yes, so what is the time here? Okay, so by default is displaying what, date time. Okay, this is date and it's taking the local server time. Okay, as per my laptop. Okay, 6:16. Okay, I can refresh. Yeah, okay, that is what, millisecond, right? Everything is okay. Okay, so I want to display like this way key. Now this time is something. Okay, let us take one yes. Okay, any variable, so that you can take here h1. Okay, in HTML code, hello, current date and time, current date and time. Okay, then can take here a plus str. Okay, concatenation, can take here what, time, then again concatenation. So yeah, you can take here like this way, and you can close here h1. Okay, and you can return which, return this one. Yes, that's it. Okay, now is it okay? So it will display what, current time is equal to something. Okay, yeah, hello, current date and time is equal to this value. Okay, and now yeah, actually we have not imported here, we are not imported here what, module. Okay, so you have to import that module. It's automatically taking, but you have to import that one. Okay, so we can write here import one module, that is what, date time. Okay, import the module. Sometimes it's work, sometimes not work. Okay, so that is better practice. Okay, so we have to import here what, date time. Okay, so without importing the date time you are getting the result, that is okay, fine. Okay, but we must have to import the date and time. Okay, that is for the practice. Okay, and h1 is showing here something mistake is happened there. Okay, what is that one? Yeah, yes, not close the HTML tag. So HTML, HTML code is not recommended to write in the Python. Okay, in Django views में HTML कोड लिखना वैलिड नहीं है. ठीक है, तो क्या वैलिड है वो हम बाद में देखेंगे. ठीक है, टेम्पलेट्स बनाने पड़ते हैं हमको. उधर HTML और CSS लिखना पड़ता है, इधर नहीं लिखते HTML CSS. दैट इज़ नॉट अलाउड. ओके, here is not allowed. Okay, and now this server is running. So this is what displaying the current date and time. That is one example I have taken. So in multiple views you can, in multiple views can write in the single views. Okay, you can write the multiple views in a single क्या बोलते हैं हम, सिंगल views.py फाइल. ओके, सो एक एप्लीकेशन में आप बहुत सारे हंड्रेड्स के ऊपर व्यूज़ रह सकते हैं, व्यूज़ फंक्शन लिख सकते हैं. ओके, तो इतने सारे उनके यूआरएल पैटर्न बनेंगे, बराबर है कि नहीं. सो अभी हमको अगर देखना है, ओके, दिस इज़ वन थिंग. Can create one application, want to display here the message based on the time. Okay, we want to display the one message, good afternoon, good morning. Okay, based on what, the time. Okay, ऐसे हमको एक views create करना है. So let us create another application, or you can create another function inside here.
Okay, best way I'm going to create another application, second application inside the same project. Okay, and here how to create another application, Django. Okay, hyphen admin. Okay, Django hyphen admin start app, and here I am going to write one app name. What is the app name? Any app name. अभी कौन सा ऐप बनाया था? डिस्प्ले टाइम. अभी हम बनाएंगे डिस्प्ले ग्रेटिंग मैसेज. डिस्प्ले डिस्प्ले हमको ऐसे एप्लीकेशन बनानी है जिसमें गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बेस्ड ऑन द टाइम के हिसाब से मैसेज जाना चाहिए. क्या लिखेंगे इसमें हम? एप्लीकेशन का नाम क्या लिखेंगे? डिस्प्ले ग्रेटिंग मैसेज. ओके, display greeting msg. Okay, now this application is created. Now go through the application first. Okay, now let us go to the views of that particular application and write the views for the applications. Okay, सबसे पहले जो भी हम व्यूज ऐप क्रिएट करते हैं तो पहले सेटिंग में जाके वो ऐप का नाम ऐड करना है. ओके, कॉन्फ़िगरेशन करना है. डिस्प्ले ग्रीटिंग ऐप मैसेज. ओके, you need to add it all the apps. You must have to add to the project level. Okay, in the setting. So we can write here display. Okay, display greeting message. Okay, this is the same application name we have to write inside the installed app. Okay, display greeting message. Okay, now go to the views. Sorry, go to the, yeah, go to the views. Okay, so now we need to go for the views where we can write the business logic. Okay, so it, import. Okay, import. So you want here the code, right? Okay, so where is that one? Our code display time views. Okay, yeah, you can write here inside here. Already we have imported that one. Okay, already I think we have written there. दोबारा लिख लिए हमने. ठीक है. Okay, so this coding I'm sharing first. Okay, or can you take the screenshot? Okay, इसका screenshot लेते क्या आप? Okay, only this coding. You can take the screenshot for this. And also we have here in the URL. Okay, go to the URL. Here is our URL, the project level. Okay, so also take the screenshot. Okay, and now, okay, close everything. Do not get confused here. Okay, we have installed the app. Now the display greeting message, go to the views. Okay, here import import Django dot http from. Okay, sorry, we have to write from Django dot http. Okay, import http response. Okay, so I want to display the message based on the time. Okay, now say 12 good morning. Okay, like this way ऐसे मैसेज हमको डिस्प्ले करना है.
Okay, so create a function def, can write here what date time, any name you can, date time info. Okay, date time info view, give any request variable. Okay, so you can give here what date is equal to, that will give the current date. Okay, date, date time dot date time. Okay, so it's automatically get imported. Okay, if it is automatically imported, that is okay, no problem. Okay, because this model we need to import that one. Okay, you can write here also, no problem. Okay, so we can give here what date time dot now. Okay, so it will display the current date and time. Okay, so now we want to display the one message. Okay, so how to display the hours, how to display the okay, so based on the hours means जितना hours है उसके हिसाब से हम मैसेज हम प्रोवाइड करेंगे. ओके, सो लेट अस टेक वन वेरिएबल एज. Okay, in the integer, so date dot string conversion. Okay, strf time. Okay, yes, and here we can give percent capital H. Okay, okay, so here integer. Okay, that is we are getting here what hours. Okay, so it is calculating the hours. Strf. Okay, formatted string format of the time. Okay, so we are getting the string format of the time. So we are converted hours into the integer. ठीक है, क्योंकि जो टाइम मिलता है उसका डेटा टाइप क्या रहेगा, स्ट्रिंग रहेगा. है क्या नहीं, स्ट्रिंग रहेगा कि नहीं. डेट टाइम मिलेगा तो उसका जो डेटा टाइप रहेगा वो स्ट्रिंग रहेगा. अभी हमको स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तब जाके हम कंडीशंस लगाएंगे कि 12 के ऊपर रहा, 12 के नीचे रहा, तो वैसे. ठीक है, अब स्ट्रिंग को हम ग्रेटर देन लेस देन कंडीशन नहीं लगा सकते. ओके, अगर कंसिडर करो कि ये है स्ट्रिंग वैल्यू, हम उसको लगाना है ऐसा ग्रेटर दैन 12, दैट इज़ नॉट वैलिड. ओके, सो बोथ मस्ट बी द स्ट्रिंग सो दैट वी कैन वैलिड दैट वन. ओके, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि ग्रेटर दैन 3 है, देन हम बोलेंगे ये गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ऐसा टाइप के ग्रीटिंग मैसेज. सो दैट्स वाई वी हैव कन्वर्टेड दिस वन इनटू द integer value. Okay, by using the int function. Okay, so now we can display the message. Okay, so like message string format time. ठीक है, string converted to the string format time. Okay, date dots, it is a function, it's a function, we are getting only that formatted type. So we have written here percent yes matlab only hours. Okay, percent yes only seconds. Okay, so if you know the date and time modules, okay, let us see here. I am going to display the date and time modules. Okay, date time modules, date time modules in Python. Okay, various functions and various patterns will be there. Okay, so you can display here percent a, percent is something. Okay, whatever can check here. Date time module that contains a lot of things. Okay, that is the formats are available here. Okay, okay, now operation. Before that we have percent years, percent something, percent a. Okay, date, month, okay, year, date dot, date dot, time. Okay, a lot of functions are here. Okay, okay, and check here the year. Okay, how we can write that one, timestamp. Then formats we can change, date formats. We have the function. Okay, we have the function to convert that one.
Okay, so we can check percentage for hours. Okay, so it will give that strf function. Okay, what we want, like this way, string strf time. Okay, and strf time, what, string format time. Okay, that is a format, what format you want, because if you write there the date and time, so you will get the date, time, everything. We want only hours. Okay, so str, that is what, string formatted time. So inside the string formatted type, we require a percentage. That means we are taking only the hours. Okay, हम सिर्फ आप hours ले रहे हैं. How we can write like this way, you can check here, lot of things are available. Okay, so now you can check here, percentage will take 24 hours clock. Okay, like this way, so that the function is get converted. Okay, that convert a number. So this in the string, it will, where we want to take the number as a integer, so that we can apply the some conditions. Okay, 12 के ऊपर 12 के नीचे 3 से 6 जब हम ग्रेटिंग मैसेज को लगा सकते हैं. ओके, कैन टेक हियर आल्सो, नो प्रॉब्लम. Okay, we have to learn some things. Okay, so I'm going to save as this one. Okay. Okay, so now let us, we are taking this into the one integer value, and that will be the h, and based on that one conditions we are going to display the message. Okay, so the one initial message, then we are going to concatenate. Okay, so initial I want to display that one, in h1. Okay, hello friend. Okay, or hello everyone. So that is what first message. Okay, and here we need to concatenate. First I want to display the hello everyone, after that we are going to display the hello everyone and good afternoon, good morning. Okay, whatever based on the time. Okay, अभी इवनिंग हो गया तो गुड इवनिंग, गुड नाइट, ऐसे मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए. तो हम इसको कन्वर्ट किया है इंटीजर में. ओके, और सब बस जो टाइम का है पर्टिकुलर फॉर्मेट चाहिए हमको, आवर्स का, वो आवर्स निकाले हमने 0 to 24 आवर्स, उसमें हम कन्वर्ट किए इंटीजर को, फिर हमको कंडीशंस लगाएंगे इफ एल्स. Okay, so now if h1, okay, if h is less than 12. Okay, इसका मतलब हम क्या डिस्प्ले करेंगे मैसेज, व्हाट विल बी द मैसेज, लेस देन 12 है मतलब 0 से लेकर 12 तक क्या रहता है. हाँ, क्या डिस्प्ले होना चाहिए 0 से लेकर 12 तक. अरे, मॉर्निंग रहता है, इवनिंग रहता है, क्या रहता है. ये समझ में नहीं आया कि मैं आपको क्या बोल रहा हूँ तब से. ये क्यों क्यों किया हमने, हमने इंटीजर में कन्वर्ट किया आवर्स निकालने के लिए. ओके, अभी डेट टाइम बोले तो पूरा का पूरा डेट और टाइम आ जाता, डिस्प्ले हो जाता, बराबर है. और वो पूरा स्ट्रिंग फॉर्मेट में रहता. ठीक है, ये देखो पूरा स्ट्रिंग फॉर्मेट में. इसमें से हमको क्या निकालना है, आवर्स निकालने हैं, घंटे निकालने हैं. ठीक है, तो क्यों निकालने हैं वो, क्योंकि उसके हिसाब से पता चलेगा हमका कि अभी मॉर्निंग हुआ है कि इवनिंग हुआ है. बराबर है क्या नहीं, उसके हिसाब से पता चलेगा ना मॉर्निंग है या इवनिंग है. हाँ, सो ये आवर्स देता है तो 24 आवर्स वाला देता है, तो इसका मतलब हमारे कितने आवर्स हो गए, 0 to 24. अब मुझे बताओ कि मॉर्निंग कब रहेंगी, कब मॉर्निंग बोलते हैं हम, ये 24 आवर्स की क्लॉक है. ठीक है, क्योंकि हमने कैपिटल एच लिखा है, बराबर है. अब मुझे बताओ कि मॉर्निंग कब रहता है. ठीक है, 24 आवर क्लॉक, 0 पैडेड डेसिमल नंबर. ओके, हाँ, बताओ. तो इसका मतलब क्या होता है कि 0 to 12, बराबर है, बराबर है. 12 बज के 1 मिनट मतलब होता है कि 0.1, 0 से लेके 12 तक क्या होता है, मॉर्निंग. इसका मतलब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कौन सा मैसेज डिस्प्ले करेंगे, मैसेज क्या लिखेंगे हम, गुड मॉर्निंग. समझे. ओके, सो ये मैसेज हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, गुड मॉर्निंग. समझ में आ रहा क्या अभी. ठीक है, लेकिन ये डिस्प्ले नहीं होगा यहाँ पे. ओके, तो मुझे कैसा कॉन्कैट करना पड़ेगा, पहले ये मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए, उसके बाद ये मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, S1 इज इक्वल टू S1 प्लस S2, है क्या नहीं, ऐसे कुछ लिखते हैं ना.
तो हम क्या करेंगे, मैसेज इज इक्वल टू मैसेज प्लस दिस वन कॉन्केटिनेशन। ओके, सो अगर इफ़ की कंडीशन, अगर आर्स जो है लेस देन 12 है, ओके, तो इसका मतलब जो मैसेज, मैसेज प्लस गुड मॉर्निंग, मतलब क्या आएगा, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ठीक है, लाइक दिस इट विल बी डिस्प्ले। ओके, यस। देन लेस देन 12 इसलिए लेस देन इज इक्वल टू नहीं लिया हमने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन क्या रह सकती है, आफ्टरनून कब रहता है, कहाँ से कहाँ तक, व्हेन आवर्स वैल्यू इज लेस देन व्हाट आवर्स, आफ्टरनून कब से कब तक, 12 से 5 तक, 5 तक रहता कि 4 तक रहता, क्या 3 तक रहता, 4 तक रहता है, 4 के बाद इवन शाम चालू हो जाती, एल्स इफ, ओके, 12 से लेके शाम कब चालू हो जाएंगी, इवनिंग 13 और 12, 12 प्लस 4, ओके, मीन्स 16, 16, 16 मीन्स हाउ मच, 4, है ना। सो 12 से लेके 4 तक क्या रहता है, आफ्टरनून। ओके, सो आफ्टरनून, ठीक है, बराबर। और फिर 16 से, फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे, लेस देन 16 के बाद से लेके इवनिंग कब तक रहती है, पूरी नहीं रहती है, नाइट भी रहती है बीच में। 8 बजे तक, 9 बजे तक, 9 बजे तक, 9 + 12, 9 + 12 कितना होता है, 21, 9 बजे तक रहती है, ठीक है, मतलब 21। तो 21 में हम बोलेंगे इवनिंग, 21 तक इवनिंग रही थी, फिर 9 के बाद जो होती है वो गुड नाइट चालू हो जाती है, ठीक है। सो डायरेक्टली उसके बाद नाइट, ठीक है। सो हाउ वी कैन राइट अ मल्टीपल कंडीशन, ठीक है, इल सिफ कैसे लिखेंगे, हाँ, वेरी गुड, ELIF, ओके, इल इफ, ओके, इल इफ यच लेस देन 16, ठीक है। देन डिस्प्ले दिस मैसेज, कॉपी पेस्ट, ओके, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, गुड, गुड आफ्टरनून, ओके, आफ्टरनून, देन अगेन कॉपी पेस्ट, एल्स इफ 4 हो गए, 16 मतलब 4, ओके। उसके बाद 21 क्या लिखेंगे हम, सॉरी, 21 क्या लिखेंगे, गुड इवनिंग, ओके। देन अगेन क्या लिखेंगे, एल सिफ, अब इसमें एल सिफ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट एल्स लिख देंगे, ख़त्म, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो फिर क्या है, नाइट है, बस ख़त्म, गुड नाइट, ओके, सो जाओ, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है कि नहीं, समझ में आ गया ना, पूरे कंडीशन सेटिस्फाई हो गए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से जो नाइट 21 चालू हो जाएंगी वो कहाँ पे ख़त्म होंगे, 24 में, बराबर है। 24 के बाद जो चालू हो जाता तो वो यहाँ पे आएंगी, और है ना, क्योंकि 0 to 24 की क्लॉक है अपनी, परसेंट एच लिया तो, ठीक है, समझ में आ गया है ये वाली कंडीशन। अगर यहाँ से 12 बजे 24 बजते हैं तो गुड नाइट आता है, 24 के बाद 1 सेकंड जाता है तो यहाँ पे आ जाएगा वो, ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। ओके, नाउ वी नीड टू प्रिंट द मैसेज दैट वन, ओके, देन प्रिंट दैट मैसेज, ठीक है, दैट्स इट। Now what we need to do, print a message, we need to send a response, okay, that is very very important, because we need to send us response, ये response हमको send करना पड़ेगा, ठीक है। which response we need to send, response, sorry, return, okay, return that response, http response, okay, what you need to pass, what you need to pass, message,
ओके, क्या पास करना पड़ेगा? मैसेज, ठीक है कि नहीं? वी आर सेंडिंग रिटर्निंग द मैसेज, राइट? नाउ गो टू द URL, project level URL. Okay, now go to the URL. What is the project name? Time demo. Okay, and project level URL. Time demo. Okay, setting URL. Now, so here we have created two views are there, right? So again we have to write here from, what is the view name? Display, display, greeting, message, import, views. Okay, so now we can check here, so this will not work. Okay, right? Because there are the here views. What is the function name? Views dot, what is the function name here? View. Okay, go to here and write this one, so it will won't work, right? I'm just writing here DT. Okay, why? Because it's not work, because there is one application display time, there is views. Okay, there is another application views. Okay, okay, that is a problem. So what is the solution for this? so हमको समझ में नहीं आएगा तो उसको सेपरेट व्यूज लिखने पड़ेंगे हमको। व्यूज एज एक नाम देना पड़ेगा, ठीक है? सो रियल टाइम में ऐसा नहीं करते हैं हम। रियल टाइम में कुछ अलग करना पड़ेगा, वो क्या करना पड़ेगा हम देखेंगे, कैसे उसमें यूआरएल्स बनाएंगे हम सेपरेट। सो सबसे पहले ये देखो कि इस लाइन नंबर 17 में कुछ तो भी एरर आ रही है। ओके, या क्या एरर हो सकती है ये? ठीक है, बराबर है अभी? और अभी देखो और कहाँ पे एरर आ रही है। सो एट्रीब्यूट एरर मॉड्यूल, दिस वन हैज़ नो एट्रीब्यूट टाइम इन्फो। ओके, सो सेम एरर आई वाज एक्सपेक्टिंग। ठीक है, सो व्हाट वी नीड टू डू नाउ, दोनों भी व्यूज़ ऐसे है तो किसी एक को हम क्या करेंगे, एज व्यू एज dt लिख देता हूँ, है ना? डिस्प्ले ग्रेटिंग टाइम, डिस्प्ले dt व्यू। ओके, dt व्यू, ठीक है? तो अभी मुझे, ओ सॉरी सॉरी, व्यू एज dt व्यू, तो अभी मुझे यहाँ पे भी व्यूज़ के जगह क्या लिखना पड़ा? dt व्यू। ओके, यू कैन प्रोवाइड URL। ओके, पाथ तो हमने लिखा है dt व्यू, स्पेलिंग मिस्टेक। ओके, ओके, यही आपको अच्छे से समझना है, बस इतना समझ में आ गया तो आधा आपका जैंगो समझ में आ गया। ठीक है, बाकी सब कॉन्सेप्ट ही है। ठीक है, इतना URL पैटर्न वगैरह सब समझ में आ गया तो हो गया। देन यू कैन प्रोवाइड हियर व्हाट dt। ओके, सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ व्हाट, गुड इवनिंग। ठीक है, दिस इज़ गुड इवनिंग, बराबर है। अगर आप सिस्टम का टाइम चेंज कर देंगे तो आपको पर्टिकुलर बताएगा। ठीक है, सो दिस इज़ द वे वी कैन राइट लाइक दिस वे टू डिस्प्ले टाइम बेस्ड ऑन द ग्रेटिंग्स। ओके, ठीक है। सो इन दिस एप्लीकेशन वी हैव, इन दिस प्रोजेक्ट वी हैव द टू एप्लीकेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने URL, अब हर एप्लीकेशन में बहुत सारे व्यूज़ रह सकते हैं, मतलब फंक्शन हम बहुत सारे क्रिएट कर सकते हैं, तो दैट इज़ गोइंग टू बी कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, सो वी हैव टू प्रोवाइड अ पर्टिकुलर path। Okay, so let us can you copy that one code? Sorry, can you screenshot, can you take the screenshot? Views कहाँ पे है? Okay, you can take the screenshot। लिख लिया? Okay, very good। okay, इसके पहले का व्यूज़ कौन सा था ये? डिस्प्ले, डिस्प्ले टाइम व्यूज़। okay, copy। okay, another I am going to write here। okay, next one,
greeting message views. Okay, then URL pattern. Okay, so we know how to view the URL. Okay, ठीक है. So we have to provide a proper URL pattern. So होम पेज ओपन करना है तो कुछ भी नहीं लिखने का, डबल कोट लेने का हो गया. ठीक है, सिंगल कोट दोनों भी इसके अंदर लिखने का. बस अगर आपको यही चाहिए वेबसाइट का नाम तो ऐसे लिख सकते हो. ठीक है, कैसे वहाँ पे पैटर्न चेंज करना पड़ेगा. ओके, यहाँ पे कुछ नहीं लिखने का, ये निकाल देने का. ठीक है, ऐसे. तो अभी ओके लाइक दिस वे. So we have the some Django URL mapping dispatcher. Okay, let us understand something about here. Okay, how we can provide this one. Okay, so we have path, referred, and include. So okay, URL mapping, URL dispatcher. Okay, so that is very important now. Okay, already we have touched this topic, that is URL. Okay, means we have created the multiple views, multiple application. So how we can provide the URL with that one. But in the real time, there will be the multiple applications. Okay, the project is a university. University having the multiple applications. Okay, student application, staff application, universities, okay, colleges application, and inside the application there are the lot of things. Just for student having the exam application, exam, okay, so exam views, result views, most of the views will be there. Okay, so we can't remember the all the URL. Okay, so what you need to do. Okay, so URL, you know, the elegant URL. Okay, scheme is an important details in the high quality web application. Django lets you design the URL however you want. Okay, so with no framework limitation to design the URL for an application, we create the Python module. Okay, inform called as a URL conf. Okay, URL configuration. So what is URL? It is a web address. Okay, resource locator you can say on the internet. So this is what URL, and we have the URL. Okay, URL and URN both are same. Okay, uniform resource locator, uniform resource identifier. Okay, HTTP, you know, the protocol that is used to send a request to the server. Okay, that is, you can say, the common language between the client and server. Here S is stand for the secured. Okay, so that is SSL. Okay, so here is the what delimiter. You can say here what a colon and a slash slash. Okay, that is special character, that is known as a delimiter. Okay, this is delimiter. And triple W is what a default domain or subdomain, and dot is what embedded character, that is period you can say. Okay, you can see here dot, there you can see here dot, you can see here dot. Okay, and ConnectSoft Infotech is a primary level domain. Okay, ConnectSoft Infotech is the primary level domain, and here dot in dot com is a top level domain, and is here having the slash and something we are going to write. We can say here path parameter. Okay, here is what query parameter. Okay, we can write like this way. Here is the query parameter and path parameters. Okay, something like that one. Okay, it's a path parameter and query parameter. Okay, so we have the some like URL and URN. Okay, both are same. So how we can customize the URL in the Django? We are having the three built-in functions which are available inside the Django. Okay, so there is a what path, we see in the path. Okay, we see in the path. Okay, हमको path हमने देखे हैं. ठीक है, path में हमने कस्टमाइज भी किए हैं URL. Okay, so we have the again. Okay, so by using the path we can provide the keyword arguments. Okay, keyword as a arguments. Okay, and what is the keywords as a argument? You have seen in the Python. Okay, keyword as a argument, how to pass the parameters to the function, right? So then another function is what repath, and third one is include. Okay, so we know I recently I talk about what so many views are available, so many URLs for the particular application, so many URLs for the particular application, so many views in the particular application, and so many application inside a project. Then how we can map everything? So no need to go for the project level
URL to map the everything. Okay, we have to cover, we can create the url.py for the every application, then we are going to include in the project level. Okay, so the path, it returns an element for the inclusion in a URL pattern. Okay, that including in the URL pattern, it is used to map the URL and call to the specific view. Okay, we know that one. So we can write here what path, then route. Route means something what your the argument you are going to provide their name. Okay, so then we have to write here view. Okay, view dot something, and that is what here the optional thing is there. What keyword as a argument. Okay, keyword as a argument, so we can provide a keyword as a argument, that is none or name none. Okay, so now right now in our example we have not provided the any keyword as a argument. Okay, no keyword as a argument we have provided. Okay, but we can provide. Okay, how we can provide, let us see, don't worry. Okay, we'll see that one. So here the route argument should be the string that contains the URL pattern. Okay, so you can see that this is what route string, this is what route string. Okay, ये जो है ये route string है, बराबर है. And this views argument is in the view function. Okay, the keyword as a argument allows you to pass the additional argument to the views function or method. So what is the use of the keyword as a argument? You can provide the additional arguments. Okay, so the name argument allows naming URL pattern. Okay, we can that is allowed in the naming URL pattern. You can provide the additional URL. Okay, so we can create one we can create one example. Okay, okay, URL demo. Okay, so let us see here. I am creating one project. Okay, you can also create here. Okay, or you can write here statement. You can write here the क्या बोलते हैं उसको, commands. Okay, so yes, how to create a project. Okay, Django hyphen admin start project. Okay, and I'm writing here what URL demo 1. Okay, spelling mistake. Okay, now go to the URL demo 1. Okay, now here start what app. Okay, so the Django hyphen admin start app, I'm writing the web app. Okay, web app. Okay, and now go through here the project level URL demo 1, and you can add this app. Okay, go to the setting first and add the app. Okay, install app, go to the install app and web app. Okay, here is the web app. And now let us go to the views inside the app. Okay, we are going to write the business logic for the particular application, particular views. Okay, so import. Okay, import Django dot http. Okay, from http response. Import Django http. Oh, sorry. From we need to write here. Statements are missing. Okay, from Django.http, and you can write here from http. Why it is not showing? Okay, from Django.http import. Okay, import http response. Okay, now we can define the view. Suppose I am writing the one home page view. Okay, home page. I can provide any request parameter. Okay, so you can write here http response, or you can give the returns http response, and inside that one you can write inside the okay h1 tag.
Okay, okay, h1 tag, and you can give here what this is the home page. Okay, this is the home page, right? This is the home page, and again I'm going to create another view here. Okay, I'm going to create here what index. Okay, index. Okay, index. So we can give here, this is a index page. Okay, this is what index page. Now let us go to the where URL. Okay, project level URL. Go to the project level में ही URLs रहते हैं. Okay, so import that views. Okay, कहाँ से view लेना है हमको? Can write here what import what is the application name? Web app. Import web app. Sorry, from web app import. Okay, what we need to import? Views. Okay, so there is only one app. Okay, so there is no issue for that one. So we can write here the path. Okay, so we can give the home page. Okay, that is for home. Okay, then you can write here what views. Views dot what you need to write. This is for home page. Okay, copy here and can paste here. Okay, then again next URL. Okay, can give the next URL. Okay, we know everything. Okay, so can give here what index. Okay, views dot what is the function name here? Index. Okay, now let us execute that one. Okay, very good. How can execute? Python manage dot py run server. Okay, now send the request. Okay, very good. Now let us open that one and you can send the request. Okay, so home, this is home page, and you can write here what index. This is index, but end user is only understand this one. Okay, एंड यूज़र को ये पता नहीं रहता पाथ वगैरह, ठीक है, उसको सिर्फ वेबसाइट का यूआरएल पता रहता, तो मैपिंग करना बहुत डिफिकल्ट होता है, इसलिए हमको ये मैपिंग करनी पड़ती है. तो होम पेज के लिए हम क्या करेंगे कि जैसे होम पेज है, हमेशा वेबसाइट का होम पेज ओपन होना चाहिए, बराबर है. सो इसीलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो ये निकाल देंगे, ऐसा रखेंगे, ठीक है. ये हो गया करंट पेज, ठीक है. तो अभी जैसा मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरा होम पेज ओपन हो जाएगा, देखो. ओके, ये देखो जो होम पेज है वो करंट पेज मेरा ओपन हो जाएगा, ठीक है. ये देखो यूआरएल देखो, दिस इज़ द यूआरएल एंड दिस इज़ व्हाट होम पेज, ठीक है कि नहीं. अब देखो यूआरएल. हाँ, सो एंड यूज़र क्या याद रखेंगे, ये याद रखेंगे, तो वी हैव टू प्रोवाइड हियर द लिंक्स. ओके, तो फिर इंडेक्स की वगैरह आपको इधर वगैरह लिंक्स प्रोवाइड करनी पड़ेंगे, ठीक है. समझ में आ गया. तो ऐसे इधर लिंक्स वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं. तो ये दिस इज व्हाट सिंपल HTML इज देयर. ओके, नो नो प्रॉब्लम. ओके, सो हाउ वी कैन डू दैट वन वी आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, वो तो हम बाद में देखेंगे कैसे हम रिडायरेक्ट करेंगे यहाँ से. ओके, तो ये जो व्यूज़ है, जैसे इंडेक्स में वहाँ पे लिखा है तो इंडेक्स की तरफ जाना है, तो कैसे रिट्राई करेंगे. एट सिंपल यू कैन यूज़ द HTML रिडायरेक्शन. ओके, आप HTML रिडायरेक्शन भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, सो इसके लिए हम कुछ HTML टेम्पलेट्स वगैरह लिखने पड़ेंगे. अभी हमने कैसे फंक्शंस बेस लिखे है ना, फंक्शन बेस्ड व्यूज़ है ये, इसके कारण वैसा लग रहा है ये. ओके, सो आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो. ओके, कैन प्रोवाइड हियर एंड कैन गिव द इंडेक्स. सो एंड यूजर डजंट नो एवरीथिंग. ओके, राइट. Okay, so you have to do like this way. Okay, so we can provide here the home and you can write here like this way. Okay, so can you provide an integer value to the web page? Yeah, so we can provide an integer value to the web page. Okay, right, we can provide an integer value to the web page. So this example we are going to see in the next class. Okay, how we can provide an integer value to the web page.
ठीक है, इंटीजर वैल्यू कैसे यूआरएल में हम ऐड करेंगे जैसे, ओके, सो दैट द थिंग्स वी आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट क्लास, ओके। और आप यहाँ पे मैपिंग कर सकते हो, ठीक है। जैसे यूआरएल यहाँ पे हम लेके जा रहे हैं इंडेक्स पे वगैरह, तो जैसे हम टेम्पलेट्स चालू करेंगे तो हम डायरेक्टली ये करेंगे, उसमें क्या करेंगे, हाइपरलिंक यूज़ करेंगे डायरेक्टली, ठीक है। सो एंड यूज़र ओनली नो द होम पेज, तो हम इसको हम एप्लीकेशंस में कर सकते हैं, लिंक दे सकते हैं, ठीक है। तो ये है आज का, तो मैं ये शेयर कर लेता हूँ, और कल हम देखेंगे कि कैसे इंटीजर वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि पाथ क्या है, इंक्लूड क्या है, रीपाथ क्या है, ये फंक्शंस हम देखेंगे।